Good evening. Now I will take this simple band brake. Yesterday I have completed the shoe block brake. So today I am taking the simple band brake, and just first try to understand that what is band. First I will give the definition of band. Band is what? सबसे पहले ये सिंपल बैंड ब्रेक क्या होती है, व्हाट इज द सिंपल बैंड ब्रेक, दिस आई विल एक्सप्लेन नाउ. सिंपल बैंड ब्रेक क्या है कि एक आपका फ्लेक्सिबल बैंड है, लीवर के साथ फ्लेक्सिबल बैंड जो है अटैच है, और ये फ्लेक्सिबल बैंड जो है जब आप लीवर को रोटेट करेंगे, राइट, जब आप लीवर को रोटेट करेंगे तो ये फ्लेक्सिबल बैंड जो है ये रोटेटिंग ड्रम के साथ कनेक्ट होगा और उसकी रोटेशन को ये स्टॉप करेगा. तो फ्लेक्सिबल सिंपल बैंड ब्रेक में फ्लेक्सिबल बैंड जो है, सो यू कैन से सिंपल बैंड ब्रेक. व्हाट इज अ सिंपल बैंड ब्रेक? So it consists of flexible band. Flexible band of किस मटेरियल का होगा? Suppose flexible band of leather with one or two ropes or steel. एक या दो इसमें रोप्स होंगी या स्टील होगी, लाइंड विद द फ्रिक्शनल मटेरियल. सिंपल बैंड ब्रेक में जो मेन पार्ट है वो किसका है? बैंड का है. और बैंड ये किसका बना हुआ है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? ये लेदर का एक फ्लेक्सिबल लेदर का एक पीस होगा बैंड की शेप में. इसमें स्टील वन और टू रोप्स होंगी या स्टील, उसके ऊपर आपका जो फ्रिक्शनल मटेरियल है उसके ऊपर लाइंड होगा, फ्रिक्शनल मटेरियल उसके साथ अटैच होगा. ये आपका लेदर है, लेदर में आपका क्या है, ये स्टील्स का पार्ट है या इसमें रोप्स हैं, और इस पार्ट के ऊपर दिस पार्ट यू कैन से दिस इज योर लाइंड विद द फ्रिक्शनल मटेरियल. सो दिस इज द फ्लेक्सिबल बैंड. एक तो इसमें ये होगा फ्लेक्सिबल बैंड, दूसरा आपका इसमें रोटेटिंग ड्रम होगा, रोटेटिंग ड्रम, राइट. और थर्ड पार्ट जो इसमें है वो क्या होगा? लीवर. So actually this is simple band brake consists in three parts, you can say. One part is the flexible band, second part is the rotating drum, and third part is lever, right. So अब इसमें देखिए अब simple band brake क्या है? What is a simple band brake? One part of the band, you can say one part of the band is attached with the hinge. ये आपका हिंज है, इसका जो एक पार्ट होगा बैंड का वो हिंज के साथ अटैच होगा, एंड द सेकंड पार्ट दैट इज अवे फ्रॉम द हिंज. दिस इज द सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिंपल बैंड ब्रेक. one part of this you can say, so one part of the band is attached with the hinge or fulcrum, right, and the second part that is
away from the hinge, that is attached with the lever. One part of the band is attached with the hinge on the lever, right, and the second part is away from the hinge, and the second part is away from the hinge and attached with the lever, and attached with the लीवर। तो क्या है ये, जो बैंड का एक पार्ट होगा वो लीवर के जो फल्क्रम है, हिंज है, उसके साथ अटैच होगा, और जो सेकंड पार्ट होगा इसका वो हिंज से दूरी के ऊपर होगा, दैट इज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज, एंड दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस इज अबाउट द सिंपल बैंड ब्रेक। समझ आया? सिंपल बैंड ब्रेक में क्या है? अगेन आई विल रिपीट इट। देयर इज अ वन फ्लेक्सिबल बैंड, इट कंसिस्ट ऑफ द leather and one or two ropes are the steel which is lined with the frictional material, and the other one is rotating drum, the drum which we have to stop it by applying the brake on the drum, and the third part is the lever, and the part of the lever is for what? Because we are applying the force from the lever, and the lever will rotate, and that will connect the drum, that will connect the band with the drum, that will attach the band with the drum, and the drum will start to stop immediately, right? So this is about that. Now iska what is the working principle of this? देखिए वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका? बड़ा सिंपल है। ये आपका ड्रम रोटेट कर रहा है, आइदर इट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इट इज रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? सो it is rotating in the clockwise or in the anti-clockwise direction. What happens? So there is a lever. Here you apply the force on the lever. When you apply the force on the lever at point C, what happens? The lever will rotate, right? The lever will rotate, and when the lever will rotate, firstly your band is free, drum is rotating, band is free, and when you apply the force, what happens? That band will connect with the rotating drum. When the band will attach with the rotating drum with certain pressure, what happens? A frictional force which is in the opposite direction of the rotation of the drum, a frictional force will develop between the band and the rotating drum. That frictional force, you can say, that is the braking force. That braking force which is in the opposite direction, that will develop, that frictional force will stop the rotation of the drum. So this frictional force will also, what happens? When the frictional force will develop here, what happens? The torque, braking torque will develop at the center of the drum, because R is the radius of this. Suppose if I say Ft is the frictional force, which is the opposing force in the opposite directions of the rotation of the drum. So the torque which will produce here, that is Ft into R, right? Torque which is produced here, that is Ft into R. This is the braking torque, and this is in the opposite directions, and that torque is called the braking torque. Frictional force will develop the braking torque, and that torque will stop the drum. This is about the working of this. Now, before designing the equation of the simple band brake, first we will try to understand about the tensions, which is a very important part here. About the tensions, first we will try to understand the tensions, because tension, first we will calculate the tensions, whether which side is the tight side and which side is the slack side.
This is very important one. So for understanding it, you must try to concentrate yourself. Suppose this is the rotating drum. I will just write. So when the drum is rotating, suppose the drum is rotating in any direction, clockwise or anti-clockwise direction. So मैंने आपको कहा कि ये जो बैंड का ये वाला पार्ट जो है, दिस इज अटैच्ड विद द hinge of the lever, and this part is attached at some certain distance from the hinge at this point V, suppose, right? So this is rotating. When this is rotating, so definitely there must be some tensions, because you have to stop the drum, and when you have to stop the drum, it means you have to apply the anti-clockwise torque on this. Suppose if it is rotating clockwise, then you have to apply the anti-clockwise torque on this, and so one side of the band, you can say one side becomes the tight side and the other side becomes the slack sides, right? So this we have to see where is the tight side and where is the tight slack side, because the tensions on the lever and the tensions on the drum, that has to be calculated, and that is a very important one. Now you try to understand it. Suppose फर्स्ट मैं एज्यूम करता हूं कि आपका ये ड्रम जो है ये रोटेट कर रहा है, राइट? सो इसका मतलब दोनों साइड्स के ऊपर कोई ना कोई टेंशन होगी. सपोज ये टेंशन T है, दिस टेंशन इज T डैश. सपोज आई विल से one tension is T and the second tension is T dash if it is rotating and we have to stop the drum. Suppose we apply the force here, and when we apply the force, what happens? This band will connect with the rotating drum, and that will produce the torque in the opposite direction, right? So that definitely there will be the tensions on the drums as well as on the lever, right? तो सपोज पहली कंडीशन हम करते हैं कि जब ये रोटेट कर रहा है और ये आपका लीवर में आपने फोर्स अप्लाई किया, बैंड अटैच हुआ. सपोज फर्स्ट कंडीशन में कहता हूं कि सपोज देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि ये जो सारा सिस्टम है इसको रोकने का, ये किसकी तरफ डिपेंड करता है? जो फ्रिक्शनल फोर्स आपकी डेवलप होगी बिटवीन द ड्रम एंड द ब्रेक कॉन्टैक्ट सरफेस, इसी पे है. तो मैं आई जस्ट वांट टू गिव यू द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस. सपोज इफ आई से देयर इज नो फ्रिक्शन force between the band and drum. जब ये ड्रम इसके साथ अटैच करता है, जहां से लीवर आपने अप्लाई किया, ड्रम इसके साथ अटैच किया, रोटेटिंग ड्रम नहीं, दिस इज योर फ्लेक्सिबल बैंड इसके साथ अटैच हुआ. सपोज मैं कहता हूं कि फर्स्ट केस एक मैं अज्यूम करता हूं कि इन दोनों के बीच में क्या है, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है. सो जब इनके दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो व्हाट हैपेंस? देयर इज नो फ्रिक्शन. सो व्हाट हैपेंस? टेंशन ऑन दिस साइड and the tension on this side, both the tensions are equal, right? So you can say T, this is equal to T dash. Tensions on this side and the tension on this side, both the tensions are equal. So when both the tensions are equal, the tensions which develop here, so both the tensions are equal, so it means there is no resisting torque here. सो टार्क प्रोड्यूस, ये टेंशन आपकी टी और टी दोनों साइड में एक है, तो टार्क क्या प्रोड्यूस होगा? सपोज ये टार्क है टी इंटू आर एंड दिस टार्क इज टी इंटू टी डैश इंटू आर. सो दिस इज योर टार्क.
तो ये आपका टार्क प्रोड्यूस होगा T into R and T dash into R. This is also equal and opposite. When this is equal and opposite, it means that net torque, this is equal to 0. Your net torque is 0. And when the net torque is 0, what happens? There is no frictional force developed on the rotating drum by the flexible band. So, no force will be applied on the drum. The brake will not be applied on the drum. So, it means the body, whatever the body is, whether it is a rotating drum, this will continuously rotating and it will not stop at all, right? So, this is the importance of your tensions here. Okay, what are the importance of the tensions? And we have to calculate the importance of the tension here, because if there is no friction, I have assumed this thing, if there is no friction between the band and this, what happens when there is no friction? Then the tension on both sides, this is also equal, and when the tensions on both sides are equal, their torque is also equal. So net resisting torque is what? Net resisting torque is 0. And when there is net resisting torque is 0, it means that the drum will not stop at all. It will start, it will continuously running, moving, it will not stop at all, right? Now, we will come to the actual case now. This is the assumption which I have done. Now, this is the actual case. So, this I will rub it because I need a space here. So, actual case में क्या है? Suppose now you take the case of this. What happens? Suppose I will take the case. Drum is rotating. Drum is rotating clockwise. Drum is rotating clockwise direction. तो ये आपका ड्रम जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है. Just see here, when the drum is rotating clockwise direction, what happens? When we apply the load on the lever at point C, the lever will rotate. And when the lever will rotate, this flexible band will attach with the rotating drum. And this flexible band will attach with the rotating drum. It will retard its motion and try to stop it. So, इसका मतलब है कि ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो इसको रोकने के लिए जो टार्क आपका होगा या जो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स होगी, वो क्या करेगी? इसको एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इट इज रोटेटिंग टुवर्ड्स द साइड क्लॉकवाइज, तो ये क्या करेगा? जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगी ये एंटी क्लॉकवाइज जो है मूव करेगी, इसको पीछे खींचेगी सो दैट इट विल स्टॉप. सो इसका मतलब है जब फ्रिक्शनल फोर्स आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, तो ये आपने हिंज से अटैच किया है, तो दिस विल बी योर टाइट साइड. This will be your tight side. This will be your tight side, that is T1, right? Flexible band जो है वो क्या है? वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी उसकी, तो ये फोर्स आपका ये एंटी क्लॉकवाइज जो है इसको खींचेगा. तो ये टेंशन जो है दिस साइड पे टेंशन, द टेंशन which is attached with the hinge, this is T1, and this side of the tension, this is T2, right? This type of the tension is T2 when it is rotating this. So just see here, if all is the this, तो जहां पे जो आपका ये ब्रेकिंग टार्क है, दिस इज योर ब्रेकिंग टार्क, दैट इज ब्रेकिंग टार्क, दिस इज योर, अगर फ्रिक्शनल फोर्स जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन है इसके रोटेशन के,
तो जो टार्क इसका प्रोड्यूस होगा दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इस पर कितना फोर्स हुआ, इस साइड पे, इस साइड के ऊपर कितना फोर्स है। सपोज T1 इज द टेंशन ऑन दिस साइड, T2 टेंशन ऑन द दिस साइड, राइट। तो नेट अगर आपका T1 मैक्सिमम टेंशन, राइट, T2 tension, T2 tension on the T2 tension on the slack side. I say R is equal to radius of the drum, theta is angle of contact, right. So before drawing the equation I will just first explain this. तो इस साइड के ऊपर टार्क कितना प्रोड्यूस होगा, जस्ट सी हियर, टार्क ऑन दिस साइड, सो टार्क ऑन दिस साइड, torque on T1 side, torque on tight side, you can say torque on tight side, this is equal to T1 into R, right. So torque on slack side, this is equal to T2 into R, right. So therefore net torque or resisting torque or you can say braking torque this is equal to how much, T1 into R minus T2 into R, यही होगा ना। नेट रेजिस्टिंग टॉर्क कितना होगा, T1 into R, दिस इज द मैक्सिमम साइड T1 into R minus T2 into R, so this is equal to, if you take this common, T1 minus T2 into R, so this is your first equation, T1 minus T2 into R, this is called the braking torque, TB is T1 minus T2 into R. तो ये जो आपका ब्रेकिंग टार्क होगा, बिकॉज इट इज रोटेटिंग, व्हेन इट इज रोटेटिंग देन you have to apply the torque which is in the opposite direction of its rotation. So in this case it is rotating in the clockwise direction. So first we have calculated the forces, we have calculated the tensions on the band. So here if it is rotating this side, so definitely your torque will be toward the एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो ये जो पार्ट है इसका वो इसको इस साइड के ऊपर खींचेगा, क्योंकि इसकी रोटेशन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देने के लिए इस साइड इसको खींचेगा. तो जहां पे जो टेंशन होगी इस साइड के ऊपर, दिट मींस द टेंशन, सिंपल वे में मैं आपको बताता हूं, जिस डायरेक्शन पे ड्रम की रोटेशंस होगी, सपोज अगर इसकी रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो सिंपल वे में ये अंडरस्टैंड करो, जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस के ऊपर या अपोजिट रोटेशंस के ऊपर जो आपका बैंड का ये जो पार्ट होगा जो जहां से अटैच है, वहां पर टेंशन अपोजिट T1 होगी, और जो सेम डायरेक्शन में है वहां पे T2 होगी. अगर इसी में केस ले देते हैं, सपोज मैं इसी में केस लेता हूं एंटी क्लॉकवाइज का, तो आपको क्लियर हो जाएगा. सपोज इफ आई विल टेक द केस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, नाउ आई विल से दैट
you are this rotating, drum is rotating anti-clockwise direction, means drum is rotating anti-clockwise direction. तो जहां पे ड्रम जो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट करेगा, तो सबसे पहले मुझे आप बताइए जो ब्रेकिंग टॉर्क होगा उसकी डायरेक्शन. So this I was explaining you the first case. So when the drum is rotating to the clockwise direction, what happens here, that this this anti-clockwise direction, the force will act to the opposite direction, and that force is the braking force, right? This force, that force is the braking force that is in the opposite direction. So we have calculated the value of TV, braking torque. In this case, braking torque is TV is equal to T1 minus T2 into R, right? So you can say this is the one equation we have derived. Now these are the two unknown values, T1 and T2, both they are the unknown values, and for calculating the unknown values, what we have to do, we have to take the equations. This is the equation which I have already explained you. This is the equation is T1 minus T1 upon T2, this is equal to E mu theta. This is the second equation. Limiting ratio of the tensions. Limiting ratio of the tensions, this is T1 upon T2, this is equal to E into mu theta, or you can say this is 2.3 log T1 minus T2 is equal to mu theta. So this is your second equations. So by equating these two equations, first you will calculate the value of T1 and T2. First you will calculate the value of T1 and T2, then you put these values in the design equation. Now I will now take the design equation of the simple band brake. This is the simple explanation which I have given to you, that how it works and what types of the braking torque, how the braking torque will produce here, which will stop the rotation of the drum. Now take the first case. जहां से आपको T1 और T2 की वैल्यू मिलेगी. अब फर्स्ट केस जो मैंने लिया था जहां पे, टू ड्राइव द डिजाइन इक्वेशन, टेक द फर्स्ट केस व्हेन case first is when the drum is rotating clockwise direction. Clockwise direction. ठीक है. So first case is your case first to design the equation of simple band brake. तो इसमें फर्स्ट केस क्या है? केस क्या है? व्हेन द ड्रम इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन. व्हेन द ड्रम इज रोटेटिंग clockwise, when the drum is rotating clockwise direction, right? तो आप ऐसा कीजिए, because the forces which we will take on the free body diagram of the lever, we will take on the lever only. We will just forget about the drum, so we will take on lever only. So you can say so this is your lever, this is your lever, so this is
ये लीवर के ऊपर फोर्स P है आपका, ये आपका T1, so this is your T1 on the hinge, ये आपका hinge है यहाँ पे, this is your hinge, so this force is on hinge, and this is your T2, ये आपका T2 है, this is at a distance of, ये कितना डिस्टेंस का इसका, दिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ A and the distance of this one, this is your L. So these are the forces which acts on the lever. So there are two more reactions also on the lever. There are two more reactions, that is Rx and Ry. There are the two more reactions on the lever, Rx and Ry. So to design the equation of this simple band brake, in case first when the drum is rotating clockwise direction, so again I will explain you, when the drum is rotating in the clockwise direction and you apply the force at point this, when you apply the force on the lever, what happens, the lever will rotate, and when the lever will rotate, the flexible band will get attached with the rotating drum. So this flexible band, if it is rotating clockwise direction, what happens? The flexible band will apply the frictional force to the opposite direction. So frictional force between the band and the drum, that is in the opposite direction, and that frictional force will produce the torque. That torque, this is also, if this is clockwise direction, the torque is anti-clockwise direction, and that torque which is in the anti-clockwise direction, this is called the net torque. That net torque or the braking torque, that torque will help to stop the rotation of the drum, right? So this is one. Now I cannot take the sigma fx equal to 0 or sigma fy equal to 0, because I don't require these two reaction forces. So sigma fx I cannot take it 0, sigma fy I cannot take it 0. So ultimately I will take the moments about the hinge, that is sigma hinge is equal to 0. Take the moment about the hinge. Suppose this hinge is O, this point is your C, and this point is your V. So take the moment about the hinge. तो जब आप hinge के ऊपर movement लेंगे, so this force is acting downward, so it means it will give the clockwise rotation. इसका rotation क्या आएगा? Clockwise rotation आएगा. तो ये force जो है, ये tension जो है, it is passing through the hinge. तो जो tension आपकी hinge से pass होगी, इसका movement क्या होगा? That is 0. So we will not take this tension T1 because its movement is 0. So ultimately there is only one tension where we have to take the moment, that is T2. As it is rotating clockwise direction, so the tension T1, this is opposite to the rotation, that is T1. This tension is T1 and this tension is T2. Only you have to find the forces where the force T1 is and where the force is T2, and what direction the force is T1 and what direction the force is T2. This you have to calculate, and this is very important here. So I have explained you to make you understand that how you will calculate the T1 and T2, right? तो अब जब मूवमेंट लेंगे आपका, तो ये क्या आएगा मूवमेंट इसका? P into L, P the distance up to hinge, distance of P up to hinge, that is L, P into L. So this is clockwise direction, and this you are taking the moment about O, so it means this is your anti-clockwise direction.
So this is minus T2 into A. T2 into A, this is equal to 0. And P into L, this is equal to T2 into A. Therefore, P is equal to T2 into A upon L. Right? So this is the first design equation when the drum is rotating towards clockwise direction. This is P equal to T2 into A upon L, right? So when it is rotating anti-clockwise direction, so when the second case is, so I will rub it. Now you understand these two equations which I have given you, T1 minus T2 into R, and this is the limiting ratio of this T1 upon T2 into R. From here, to calculate when you will design the equation or when you will calculate the numericals, from here you will get the value of T1 and T2. By getting the value of T1, you can substitute to the other equation and you will get the value of T2, right? So I will rub it now, as it we don't require it. So second case I will take here, second case I will take when it is rotating anti-clockwise direction. So when it is rotating anti-clockwise direction, so then what is the, first I will calculate the tension. So when it is rotating anti-clockwise direction, this is the second case. When the drum, your second case is case second. When the drum is rotating, when the drum is rotating anti-clockwise, when the drum is rotating anti-clockwise direction, this is the second case. So फिर हमें जहां पे कैलकुलेट करने पड़ेंगी आपको टेंशंस, यू हैव टू कैलकुलेट. तो टेंशन कैलकुलेट करने के लिए देखिए, दोबारा अंडरस्टैंड कीजिए, जब आपका ड्रम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो इसको स्टॉप करने के लिए जो आपकी फोर्स होगी वो क्या होगी, आपकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी. अगर इसकी डायरेक्शन इधर है तो जो आपकी टेंजेंशियल फोर्स आपकी होगी, ब्रेकिंग फोर्स होगी, दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन. और जब ये फोर्स आपकी अपोजिट डायरेक्शन होगी तो जो आपका ब्रेकिंग टार्क होगा, जो आपका ब्रेकिंग टार्क होगा, सो दिस इज योर ब्रेकिंग टार्क टीवी. तो ये आपका किस डायरेक्शन पे होगा, क्लॉकवाइज. Because the drum is rotating anti-clockwise, so the braking torque that is toward the clockwise direction. ठीक है, ये clockwise होगा. जब ये clockwise direction के ऊपर होगा तो ये क्या करेगा, इधर आपका स्ट्रेस ज्यादा पड़ेगा, इधर ये टेंशन ज्यादा होगी. दिस इज द टाइट साइड एंड दिस इज द स्लैक साइड. So this is the tight side. So here in this case your this tension is T1 is here and there is your tension T2. You understand this? सेकंड जो मैंने आपको एक इजी मेथड इसका बताया था कि रोटेशन आपने देखनी है ड्रम की. अगर रोटेशन आपकी क्लॉकवाइज होगी तो उसकी अपोजिट जो डायरेक्शन होगी उसमें आपका टेंशन T1 होगा, मैक्सिमम टेंशन होगी, और जो सेम साइड होगी वहां पे टेंशन आपकी कम होगी. सो इसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज थी तो जो आपका ब्रेकिंग टार्क था दिस इज क्लॉकवाइज. तो इसको रोकने के लिए क्या करेगा, ये जहां से फोर्स लगाएगा, ये इधर से इसको फोर्स लगाएगा, मैक्सिमम फोर्स इधर से लगाएगा, सो दैट जो इसकी रोटेशन थी इधर, इसको ये रोटेशन को स्टॉप करे, ड्रम की रोटेशन को स्टॉप करे. तो इसलिए आपका टेंशन T1 जहां पे T1 है जहां पे T2 है. इसका मतलब ये हुआ
जो टेंशन आपकी पहले केस में जो टेंशन हिंज से पास कर रही थी, जब क्लॉकवाइज रोटेशन थी ड्रम की, उस वक्त टेंशन आपकी T1 इधर से पास कर रही थी। अब ये जो टेंशन है ये आपकी T2, ये यस T2 टेंशन पास होगी, और ये जो आपकी टेंशन है, दिस टेंशन इज योर T1. Rest everything is same, equation is same, only you have to reverse the value of T2. Here is T2, you have to reverse the value T2 with T1, because here T2 is also passing through the hinge, and we are taking the moments about the hinge, and this is passing through the hinge, so the moment of T2 that is equal to 0. So what happens? So in this case, what is the design equation? P into, take the moment, take the moments about the hinge, that is O. So sigma, इस केस में भी sigma m hinge, that is equal to 0. Now what is the moments? This is P into L, this is clockwise direction, and this is will be the same one, anti-clockwise direction, minus T1 into A, this is equal to 0. So therefore P into L, this is equal to T1 into A, therefore P is equal to T1 into A upon L. So almost both the equations are same, only we have reversed the value of T2 with T1 or T1 with the T2. So this is the equation, design equation of the simple band brake. You don't have to remember its formula, simply you will understand how I have calculated it, and when there is a numerical, you will just take the moments and calculate the numericals. ठीक? So this is about the design equation when in case of simple band brake. Now the next one is differential band brake. Second case is now let us start the differential band brake. Differential band brake. Differential band brake. First you have studied the simple band brake, and now differential band brake. First of all, try to understand the difference in this. What is the difference in simple band brake and differential band brake? Simple band brake में क्या था कि एक टेंशन जो थी आपकी, एक जो टेंशन थी, जो फ्लेक्सिबल बैंड था, उसकी जो एक टेंशन थी आपकी, वो हिंज से पास करती थी, that is attached with the hinge, and the second tension that is at some distance, right? One part of the, or you can say that one part of the flexible band is attached with the hinge, and the second part that is attached with away from the hinge on the lever. What in case of differential band brake, what is there, that one part, both the parts, you can say both the parts, they are away from the hinge, they are not attached with the hinge, they are attached at some certain distance from the hinge. This is toward left side and this is toward right side of the hinge. So both the parts, they are away from the hinge, they are not attached on the limb. Whereas in case of simple band brake, that one part passes through the hinge or attached with the hinge, whereas the other part is at some distance from the hinge. But in case of this, both the parts, they are away from the hinge, they are not attached with the hinge, right? So this is the difference. But अब ये समझने वाली बात है कि if ये अगर इस टाइप की आपने एक डिज़ाइन तैयार किया है ब्रेक का, सपोज इफ दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल बैंड ब्रेक, ये जो डिज़ाइन है, तो इसमें कोई ना कोई एडवांटेजेस होगा, तभी इस तरीके का डिज़ाइन जो है फार्मूलेट किया। उसमें क्या एडवांटेज होगा इसका
मतलब कोई कुछ ना कुछ एडवांटेज इसमें होगा, तभी तो इस किस्म का एक फार्मूलेशन किया है कि आप पहले केस में जो हिंज में पास करता था एक वन पार्ट इसका, अब दोनों पार्ट जो है हिंज से अवे हैं, सो देर इज सम एडवांटेज, यू कैन से देर इज सम बेनिफिट होगा। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी विल ड्राइव द डिजाइन इक्वेशन, देन यू कम टू नो कि व्हाई वी हैव formulate such type of brake. What is the reason behind this to formulate such type of brake, and what advantage we have got in that? This only you can find out when you will design the equation of this. So first case I will take it. So this is the difference, otherwise everything is same. There is a band, you can say there is a band here. So this is the flexible band, drum is rotating, flexible band is attached with the lever. So when the drum is rotating and the flexible band is not attached with the lever, so you can say it is free. So what happens when we apply the force? So first case I will take clockwise direction. When the drum, first case है आपका, when the drum is rotating, when the drum is rotating clockwise direction, जब आपका ड्रम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो उस केस में हम इसकी डिजाइन इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट, वी विल ट्राई टू सी कि व्हाट द डिजाइन इक्वेशन इज एंड व्हाट टाइप ऑफ एडवांटेज वी हैव गॉट टू फार्मुलेट सच टाइप ऑफ डिफरेंशियल बैंड ब्रेक। इसमें हमें क्या बेनिफिट हुआ, किस लिए हमें ये इस किस्म की फार्मूलेशन इसकी डिज़ाइन करना, ब्रेक की डिज़ाइन करना पड़ी कि एक पार्ट को उसने हिंज से पास नहीं किया बल्कि दोनों पार्ट को हिंज से अवे रखा। तो इस ये आपको तभी समझ आएगा जब हम इसकी डिज़ाइन इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस देन यू कम टू नो कि व्हाट इज द एडवांटेज वी हैव गॉट, राइट। सो द सेम प्रोसीजर हियर, देयर इज नो डिफरेंस, इट इज रोटेटिंग clockwise direction. So when it is rotating clockwise direction, so first of all we have to calculate the tensions on the band, direction of the tension, कि tension जो है किस direction में होगा। So when it is rotating clockwise direction, what happens, your frictional force or the braking force that will produce between the contact surface of the drum and the band, and that will in the opposite direction, वो क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और वो जो फोर्स होगी आपकी, जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगी, जो नेट टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा, या जिसको हम ब्रेकिंग टॉर्क करेंगे, तो ब्रेकिंग टॉर्क आपका जो है दैट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिकॉज द ड्रम इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो द दिस नेट टॉर्क दैट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो क्या करेगा, ये टार्क ड्रम ऐसे रोटेट कर रहा है, इसको ये इस तरीके से, ये बैंड जो है इसको इस तरीके से खींचेगा इस साइड के ऊपर। तो जो टाइट साइड आपकी होगी, जो टाइट साइड होगी, जहां पे मैक्सिमम टेंशन होगी, वो कहां पे होगी, वो आपकी मैक्सिमम टेंशन इस साइड पे होगी, दैट इज T1। सो दिस साइड इज T1, सो डेफिनेटली देन दिस साइड इज योर T2। So this side is your T2. Now we have calculated the direction of the tensions. This is T1 and this is T2. अब क्या करेंगे इसके आगे, आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, मैंने ये फ्री बॉडी डायग्राम इसका ड्रा किया है, बिकॉज वी हैव टू टेक द फोर्सेज ऑन द लीवर ओनली। सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस। मैंने इस पार्ट को, ये जो आपका पार्ट था, ड्रम वाला पोर्शन था, इस पार्ट को मैंने छोड़ दिया और फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाया। तो जो फोर्स, जो टेंशन आपकी इस साइड के ऊपर होगी, ये टेंशन क्या होगी आपकी T1, राइट। और जो टेंशन आपकी इस साइड के ऊपर होगी इन केस ऑफ व्हेन द ड्रम इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, दिस इज T2, राइट।
तो टेंशन आपको मिल गई, दिस इज T1, दिस इज T2 एंड दिस इज T. बट इन केस ऑफ simple band brake, what happens that one tension that is one tension that is passing through the hinge, and when tension is passing through the hinge, whether it is T2 or T1, so it means the moment of that tension is 0. But in this case both the tensions are away from the hinge, so it means that we have to take the moments of both the tensions or both the forces, right? So take this sigma m hinge, this is equal to 0, or you can say take the moment about O. When you will take the moment about O, what happens? This moment is your clockwise direction. The moment of T2, this is your anti-clockwise direction. So this is your clockwise, this is your anti-clockwise, and this is again your this clockwise direction, right? This is clockwise direction, right? Now frame the design equation taking the moments of this. So you can say P into, what is the distance of P from here hinge? That is L. P into L. So this is anti-clockwise direction, so it is minus T2, and the distance of this is A. And this is T1 plus T1 into V, this is equal to 0, right? This is equal to 0. This is the equation, because we have taken the summation of the moments about the hinge. So P into L minus T2 into A plus T1 into B, this is equal to 0. So from here you can say P into L, this is equal to T2 into A minus T1 into V. Therefore the P is but how much? That is T2 into A minus T1 into V upon L. So this is the design equation. So from this equation, and the equation which I have already derived in case of your this simple band brake, in simple band brake, when it is rotating clockwise direction, so simple band brake में आपकी इक्वेशन क्या आई थी? P is equal to T2 into A upon L, right? P is equal to T2 upon T2 into A upon L. Just see both the equations. This is your band brake, simple band brake में equation थी when the drum is rotating clockwise, and this is the equation when the drum is rotating clockwise in the differential band brake, T2 into A minus T1 into V upon L. So from this equation, if you compare these equations, you will come to know. So here we are applying the more efforts, because only the effort on the lever is provided by the P only. So there is no other force on the lever to provide its rotation, ठीक है, to increase its effort. Its P is equal to T2 into A upon L. तो इसका मतलब है हमें efforts जो था in case of this, efforts on the lever, or you can say braking force जो थी आपकी, ये क्या थी?
ज़्यादा थी, ब्रेकिंग फोर्स is maximum in this case. Now come to this equation. Here you will see that here you have applied the less effort because the equation is T2 into A minus T1 into B upon L. So from the equation you can see here that here is a minimum effort as compared to this. So the braking force in this case is minimum, or the braking force in this case reduces considerably. So such type of brakes, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया शू ब्रेक में, such type of brakes are called the self energizing brake. So ये जो ब्रेक होगी आपकी इस केस में डिफरेंशियल ब्रेक, that is self energizing brake, self energizing brake, because you have to apply the minimum effort here. आपको जहां पे एफर्ट, आपको जो ब्रेकिंग फोर्स आपको लगानी पड़ी ड्रम को स्टॉप करने के लिए, ये आपको कम लगानी पड़ी एज कंपेयर टू दिस. सो दिस इज द एडवांटेज. मैंने आपको स्टार्टिंग में बात की थी कि ये जो डिफरेंशियल बैंड ब्रेक हमने बनाया, जिसको फार्मुलेट किया, ये किस लिए किया? क्योंकि सिंपल बैंड ब्रेक तो ऑलरेडी वी हैव डिजाइंड, बट ये जो किया तो इसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, कुछ ना कुछ एडवांटेज होगा. सो दिस इज द एडवांटेज दैट इन केस ऑफ डिफरेंशियल बैंड ब्रेक, ब्रेकिंग फोर्स इज मिनिमम as compared to the braking force in case of simple band brake, and such type of the brake is called the self energizing brake. Again I will explain you as to yesterday I have explained you in case of shoe band brake why it happens. देखिए इधर से देखिए आप, now you come to this point. Here this on the lever you are applying the effort P, here you are applying the force at this point, and this force is rotating the lever. When this force is rotating the lever, now you come to this. So this force also, the tension T1, this is also in the clockwise direction. So it is helping this force to rotate the lever also. J भी इसके साथ इसको help करेगी रोटेट करने में, क्योंकि J जो आपका T1 है, this is also in the clockwise direction. और ये मैंने आपको बताया था when the movements of P and the movement of tension are on the same डायरेक्शन. जब ये दोनों मूवमेंट आपके सेम डायरेक्शन में होंगे, बिकॉज दिस मूवमेंट इज आल्सो टुवर्ड्स द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस मूवमेंट इज आल्सो टुवर्ड्स द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो इट मीन्स दैट द टेंशन T1, this is also helping the force P to rotate the lever or apply the brake. So in this case you can say, as a result you can say the force P is reduced considerably. So when the movements of P and the movement of tensions are on the same direction, so it means that T1 is helping the P to apply the brake. So it means P is reduced considerably. So P is reduced. So such type of brakes are called the self-energizing brake. समझा है आपको? तो ऐसी जो ब्रेक्स होती हैं इनको हम सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक कहते हैं, जहां पे आपको मिनिमम एफर्ट्स, मिनिमम फोर्स यू हैव टू अप्लाई, बिकॉज द अदर टेंशन और द अदर फोर्स दैट इज आल्सो हेल्पिंग द P टू अप्लाई द ब्रेक. सो सच टाइप ऑफ ब्रेक्स आर कॉल्ड द सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक. अब इसमें वन पॉइंट इज देयर,
अगर आप फोर्स को P को मिनिमम करते हैं, राइट, आपकी P मिनिमम है, बट अगर P आपका बहुत ज़्यादा लेस हो जाता है, P को आप इतना लेस कर देते हैं कि सपोज आप P की वैल्यू को 0 कर देते हैं, जो आप एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं P की वैल्यू 0 है. सपोज इफ द वैल्यू ऑफ P, if the value of P is equal to 0, अगर वैल्यू P की 0 होगी, if the value of P is 0, it means the brake is not under your control. You are not applying any force, and you are not applying any force, so you cannot stop the things at your own will, because the force which you have applied, braking force which you have applied to stop the drum or the rotating body, that force, if you say its value is P is 0, so in this case what happens? The brakes are not under your control, so such position is not beneficial. So such type of brakes, when P is 0, such type of brakes are called the such type of brake, such types of brakes are self-locking. Such type of brakes are called self-locking brake. समझ आया ये कंसेप्ट आपको सेल्फ लॉकिंग का? सेल्फ लॉकिंग का क्या कंसेप्ट है कि अगर आप P की वैल्यू, सपोज इफ द वैल्यू ऑफ P आप ये लेस करते 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 इतना लेस हो जाता है कि दिस इज इक्वल टू 0, अगर P की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है तो इसका मतलब है जो आप एफर्ट अप्लाई करते हैं, मैनुअली जो एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं वो एफर्ट आपका 0 हो गया, राइट. So that effort is 0. It means that brakes are not under your control. So such type of brakes, and when such type of position arises, that type of brakes are called the self-locking brake. So in order to avoid the self-locking brake, in order to avoid that, what we have to do? In order to avoid, again the same condition, in order to avoid self-locking, in order to avoid self-locking, P should be greater than 0. There must be some positive value of P. ये आपको याद रखना है. There must be some positive value of P. P should be positive. There must be some value of force which you are applying that should not be 0. So it means that P should be greater than 0. So or you can say T2 upon A minus T1 into V, this should be greater than 0, or T2 upon T1 should be greater than B upon A, should be greater than B upon A. So this is the condition. For self-locking condition, this is the condition, and here you will get the numerical. This is a very important chapter. This is a very important chapter. Brake is very important chapter as a gate point of view, and you will get the definite numerical from this self-locking, energizing. So mostly you have to give the good concentration to this, so that you must understand, and और आपके जो जितने भी doubts हैं, that should be पूरे कंफर्म होने चाहिए, पूरे अच्छे तरीके से आपको इनको रिजॉल्व करना चाहिए अपने डाउट्स को. तो आई थिंक एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड इट कि व्हाट इज सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक एंड व्हाट इज द सेल्फ लॉकिंग ब्रेक. सो दिस इज इन द केस ऑफ व्हेन वी आर टेकिंग द ड्रम इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नाउ द सेकंड केस हियर, Now the second case here, when the drum is rotating anti-clockwise direction.
तो सेकंड केस क्या है, जब ड्रम आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेगा। तो जब आपका ड्रम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में ड्रम होगा, तो जो आपका ब्रेकिंग टार्क होगा, मुझे बताइए ये किस डायरेक्शन में होगा। अगर ड्रम इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो आपका ब्रेकिंग टार्क होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिकॉज जो आपका नेट रेजिस्टिंग टार्क होगा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, क्योंकि हमने ड्रम को क्या करना है, स्टॉप करना है, इसको रोकना है। इसके रोकने के लिए क्या होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो डेफिनेटली जो आपकी टेंशन्स हैं यहां पे, तो ये भी चेंज हो जाएगी। इन केस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हियर आई विल राइट डाउन व्हेन द ड्रम इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हेन ड्रम इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इनकी टेंशन्स को। तो टेंशन इस केस में देखिए, जब ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपका जो ड्रम जो रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो आपका ब्रेकिंग टार्क है दिस विल प्रोड्यूस टुवर्ड्स द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो व्हाट हैपेंस, ये इधर से इसको खींचेगा, इसको स्टॉप करने के लिए। तो जो टेंशन होगी इस साइड के ऊपर, जो टेंशन होगी ये आपकी टेंशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी, दैट इज टेंशन T1। और जो इस साइड के ऊपर टेंशन होगी ये आपकी T2 होगी। सेम इसी तरीके से जो आपकी टेंशन जहां पे होगी T1 होगी, और जो जहां पे टेंशन होगी दिस इज योर T2। समझाया आपको? रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। आई हैव ड्रॉन द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द लीवर, ओनली आई हैव जस्ट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द टेंशन हियर व्हेन इट इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, so that definitely the frictional force will produce towards the opposite direction of its rotation, that is clockwise direction, and that frictional force will develop the frictional force, or you can say the braking force, that will develop the braking torque, and your braking torque that is towards the right hand direction, or you can say clockwise direction. So जहां से आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, जहां से आपको, क्योंकि मैं हर इक्वेशन में आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको टेंशन्स लेनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो जहां से आपको दूसरा देख लीजिए, जिस डायरेक्शन में आपका जो ब्रेकिंग टार्क होगा उस डायरेक्शन में जो आपकी फोर्स होगी, दिस इज T1 इज मैक्सिमम एंड दिस T2 इज मैक्सिमम। और यू कैन से इफ द ड्रम इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, T1 जो होगी वो लेफ्ट साइड के ऊपर होगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो T2 इसके अपोजिट डायरेक्शन जो होगा उसके T1 उसके अपोजिट होगा। ये एक लेमैन की तरह है, बट प्रैक्टिकली जो मैंने आपको बताया, जो ब्रेकिंग टार्क है वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। जब ब्रेकिंग का टार्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, टू स्टॉप द ड्रम व्हाट विल हैपेंस, देयर इज ए मोर टेंशन ऑन दिस। ये जो आपका फ्लेक्सिबल बैंड है ये इधर से मोर टेंशन लगाएगा, तो मैक्सिमम टेंशन आपकी इसमें होगी इस साइड पे, और ये मिनिमम टेंशन होगी टू स्टॉप द ड्रम, राइट। तो अगेन बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, otherwise there is not much difference, but I will just design its equation taking sigma m hinge, this is equal to 0, this is P into L clockwise, ये सेम रहेगा, माइनस T1 इंटू ए माइनस T1 इंटू ए प्लस T2 इंटू वी प्लस T2 इंटू वी, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। Now your this design equation becomes PL, this is equal to T1 into A minus T2 into V, therefore P is equal to T1 into A minus T2 into V upon L. So this is the design equation when the drum is rotating anti-clockwise direction, everything is same, only you have to reverse the tensions.
T1 A माइनस T2 B, जो पहला केस था उसमें T2 इधर था, T2 A माइनस T1 B. Only you have to reverse the equation tensions, otherwise everything is same. And from this equation also, if you will see this equation, so this equation is also self-energizing equation, because if you compare this equation with your simple band equation, that is T2 into A upon L, P is equal to T2 into A upon L in the clockwise direction or anti-clockwise direction. This is T1 into A upon L. It is because I am taking this anti-clockwise direction. So the equation in simple band break, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा,